India. Dr. Professor Romesh Gautam is a senior advocate, Supreme Court of India for the last more than 33 years. He completed his LLB, LLM and LLD, PhD in law. He has also been awarded honoris causa by 3 prestigious universities. He is visiting professor in many universities in India and overseas. He has been Advocate General for 7 states. He has conducted several cases in international and national importance. His clients included central ministers, governors, and chief ministers. He has advised many foreign bankers, including KfW Germany, Nordic Investment Bank, Finland, Swiss Bank Corporation, Barclays Bank, London, Lloyd Bank, etc., who have accepted his advice and granted huge amount of loan to Government of India in 1994. He is the first Indian lawyer who has conducted International Level Dispute Review Board, ADR cases for which he has entered in Limca Book of Records. He is third lawyer in the whole world to conduct ADR cases. He has acted as an arbitrator and also as counsel in number of arbitration cases in India and abroad. He is well-known personality in the field of law in India and abroad. Today he is with us as our esteemed guest. Padma Shri, President Award and Limca record holder, Professor of Law, author, writer, motivator, political strategist and analyst. Senior arbitrator for several organizations and also global chairman and director general, Legal International Human Rights Organization, world chairman of Legal All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice. He is the chairman of Legal Hindu Sanatan Vahini, chairman and national legal advisor of ABMS, national legal advisor of Sri Parashuram International and fellow of Indian Council of Arbitration. And he is also the senior life member of Indian Council of Arbitration and also Bar Association of India, recipient of 50 international and national awards. Give them a big hand, please. Including the title of International Jurist, International Achievers Award, Pride of Nation, Bharat Gaurav, National Law Day Award, Best Jurist, Pride of India, Delhi Ratan, Haryana Gaurav, Human Rights and Social Rights Activist. Such a learned person and such an experienced person, Dr. Professor Romesh Gautam ji. Thank you so much. मंच पर उपस्थित मेरे सारे ही मेरे से तो सीनियर हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे बारे में शायद कुछ ज़्यादा ही कह दिया गया। आज मेरे को यहाँ आने के बाद जो तजुर्बा हुआ, मैं सोचता था कि मैं कुछ बात अपनी यहाँ कहने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाऊँगा। जब मुझे जून के एंड में ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ से फ़ोन किया कि हम एक लीगल सेल का कोई प्रोग्राम रख रहे हैं, तो आप आएँ। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑफ कोर्स कौन नहीं जानता, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब मेरे पास ऑल ऑफ ए सडन फ़ोन आया, तो पहली बार फ़ोन आया, मैंने सोचा कि ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो इनको जानता नहीं हूँ, ये मुझे क्यों बुला रहे हैं, मुझे तो इस फील्ड की, स्पिरिचुअलिटी की, मेरे को अध्यात्म की मुझे क्या नॉलेज है, मुझे क्यों बुला रहे हैं। आई ट्राई टू अवॉइड, लेकिन कुछ रूहानियत के रिश्ते ऐसे होते हैं जो मैं इस उम्र में आके इस बात को समझ सका हूँ कि वो रिश्ते जो है ना, वो कभी बहुत पहले से जुड़े होते हैं। जिस चीज़ को मैं 1 महीने पहले कह रहा था कि मैं इनको जानता नहीं हूँ, मेरे को क्यों बुला रहे हैं, उनके पास विदिन ए मंथ मैं यहाँ आ गया। और यहाँ आके मुझे जो अब मैं अपनी एकेडमिक्स स्पीच जो आएगी वो तो बाद की बात है, मैं पहले अपनी बात, अपने आपस की जो बात करना चाह रहा हूँ वही कराऊँगा। तो यहाँ आके मुझे लगा कि मैं यहाँ आया, ऑफ कोर्स इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस,
आबू रोड भी बहुत सुंदर है, ये भी जगह बहुत ही खूबसूरत है। मैं पहली बार आया हूँ और यहाँ आके मुझे लगा कि मैं अपने ऑफिस को भूल गया हूँ। जिस चीज़ को हम 2 मिनट में 3 मिनट में व्हाट्सएप और मोबाइल के ज़रिए हम जिन बातों को करते हैं, जिनका फीडबैक हम लेना चाहते हैं, वो फीडबैक मैंने अब तक नहीं लिया है। सुबह से सुबह 4 बजे मैं पहुंचा था यहाँ, और 4 बजे तो कोर्ट नहीं खुलती हैं, लेकिन मेरे कुछ मुकदमे आज थे जिनको मैं छोड़ के आया, और कुछ मंडे को हैं जिनको मैं नहीं करूँगा। लेकिन मेरे को ऐसी कोई मतलब फ़िक्र ही नहीं है मेरे को कि मैं उनके बारे में पूछ से या मेरे बच्चों से जो लॉयर हैं कि क्या हुआ। मेरे को लगता नहीं कि मुझे पूछने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ सब कुछ ठीक ही हो गया है, और वो सब कुछ ठीक ही हुआ होगा। और अब जो मैं यहाँ आ गया तो अब मेरा मन भी करता है कि मैं यहाँ बार बार ही आऊँ। और शायद मैंने कुछ अपने बड़े भाइयों को ये भी कमिटमेंट कर दिया है कि 7-8 ईयर्स के अंदर अंदर मैं यहाँ फुल टाइम आ जाऊँगा, और तब तक मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे। वो भी मेरी एक जिम्मेवारी है जो मुझे पूरी करनी है। उसके बाद मैं यहाँ फुल टाइम ही आ जाऊँगा, और मुझे किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, और पैसा कुछ भी चीज़ नहीं है। जो कुछ है आत्मिक शांति है, जो यहाँ आके मिलती है, यहाँ आके जो मुझे मिली है। मुझे नहीं लगता कि पैसा या कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ जो है इससे ऊपर है। मुझे नहीं लगता इससे ऊपर कोई चीज़ है। हो सकता है आज से 20 साल पहले मेरी सोच दूसरी रही हो, बट आज मैं जिस सोच को मैं रखता हूँ और जिस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ आने के बाद, मैं समझता हूँ आत्मिक शांति से बड़ी चीज़ कोई नहीं है, और जो माउंट आबू में आके मुझे यहाँ मिली है। तो मैं सबसे पहले जिनको मैं कह रहा था कि मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे फोर्स किया, मुझे इंसिस्ट किया, और वो मेरे अच्छे के लिए किया। और मैं यहाँ से सीख के जाऊँगा, किसी को कुछ बता के या सिखा के नहीं जा सकता। मैं यहाँ लर्नर हूँ, मैं यहाँ किसी को सिखाने वाला टीचर नहीं हूँ। अब मेरी जो स्पीच आज की जो है, वो स्पीच कुछ एकेडमिक है, कुछ लीगल है। मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, बट मैं थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा फ्लुएंट हूँ, तो मैं इंग्लिश में ही अगर बात करूँगा तो आई होप आप लोगों को एतराज़ नहीं होगा। हिंदी में मैं जो बात कर सकता था, मैंने आपस की जो बात की है, मैं अपनी स्पीच पर आता हूँ। मेरा टॉपिक आज जो मुझे बताया गया, जिसके लिए मुझे बोलना है, वो एंशिएंट विजडम इंस्पायरिंग फ्यूचर। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा। ओम शांति। Today I chose to talk about the transition in laws related to women from time to time of Manu Smriti till today. The purpose of talking about this aspect is to focus on as to how the ancient laws have affected the present ones and in which manner. According to Collins English Dictionary, the word ancient wisdom refers to the pre-Christian knowledge, philosophy, and beliefs. Everybody has a different perception of the same word. For one person, wisdom is something which one generation passes to another, and for another, wisdom is a privilege which the fortune ones acquire through experiencing various challenges in life. The present word gives us numerous insight into the importance of harmony between ancient wisdom and modern civilization, be it in our interpersonal relations or personal conduct. From ancient Greek to ancient India, wisdom has been an ideological stalwart for the modern man in more areas than one. Although the human race has been advancing rapidly and proudly claims to leave behind the regressive shackles of the past, it is in the process also leaving behind an indispensable legacy of wisdom, insight, and morality. Manusmriti is a document that discusses the code of conduct for human society. The set of documents can also be called
Dharma Shastras. Hindu believe that to make life meaningful, we have to pursue 4 goals simultaneously. Be socially responsible, dharma, generate and distribute wealth, indulge in pleasure, and don't get too much attached to anything. Manu Smriti is a code of conduct put together by Brahmins, mainly for Brahmins and maybe for other upper caste communities, especially the king. Therefore, it is also called the Manav Dharma Shastra. The ancient text consists of quotes in Sanskrit, some of which talks about how food should always be worshipped and overeating should always be avoided, and how auspicious knowledge shall be received from humble respect even from the one who are inferior to in age, who are younger to you. Apart from this, all the others, a very famous quote of the Manu Smriti is where women are respected, devatas abide happily. Where they are not honored, no sacrifice or no ritual can bear fruits. In ancient Hindu law, the wife was regarded as half of her husband. During the course of history, women lost their honored place due to social, economical, and political factors. Socially evil customs like sati, child marriage, enforced widowhood, and dowry system arose and led to decline in women's status inside and outside the home. Ancient traditions such as sati, johar, and devdasi have been banned and are largely defunct in modern India. However, some cases of these practices are still found in remote part of India. The need of reviving the principle of ancient wisdom is explained beautifully by Dalai Lama in his book Paradox of Our Time. States how mankind has multiplied its possession but corroded its values, and how the same development and technology which we blame for our alarming state can be harnessed by us to turn things around and become a prosperous race and interact value system. It is in this way that the modern times can be much more peaceful and productive with the infusion of ancient wisdom into our everyday life on micro as well as microscopic level. During the last few years, increasing number of sexual harassment at workplace, eve teasing, abduction, female feticide give an indication to behavior patterns prevailing in this society. Majority of women live the life of dependency, struggling for equality, justice, and parity between the women and men continues with more and more literature appearing on the subject on empowering the women. The law has come to the aid of the women with change in laws relating to the marriage and divorce soon after independence. The Hindu Marriage Act 1955 amended and codified the law relating to the marriage and divorce between Hindus. Before this act was passed, polygamy and had legal recognition. There have been many women-oriented legislations such as Dowry Prohibition Act 1961 and Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986 and Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. Apart from these enactments, the Constitution of India also provides for certain fundamental rights in Article 14, 15, and 16, which, though not specific to women, are interpreted as and when required to protect the interest of women. Article 15.3 provides that the state may take special measures to guarantee equality of women and men. Article 39.1 emphasizes that citizens, men and women equally have the right to an adequate means of livelihood, and Article 39D says that the state should secure equal pay for equal work for both men and women, and Article 34, it provides that the state shall make provisions for securing just and humane for work for maternity relief. 73rd and 74th Amendment in the Indian Constitution in 1993 are the milestone in the history of India, which provides a lot of power for local bodies. It paves way for decentralizations, empowers the poor people as well as women.
According to these amendments, not less than 1/3 of the seats meant for direct election of members at each tier of panchayat are to be reserved for women, and not less than 1/3 of the seats of the chairperson at any level reserved for women. In a race for development of material prosperity, mankind has reduced to a state of abundant information, but scarcity of wisdom, which is quite alarming. Evident from the current global and domestic scenarios, which are laced with spirit of non-cooperation, hostility, and unhealthy competition. It is times like these which call for an immediate and encompassing inculcation of the principle of ancient wisdom, be it regarding international relations, welfare, diplomacy, justice, or more societal conduct. To conclude, it may be interpreted as that there has been an immense change in the nature of laws for women. The history of laws and the time in which the laws were made has been essential for deeper understanding and intricacies of lawmaking. Some might argue that ancient wisdom comes from a very primitive stage of civilization, but it renders it obsolete in the present time. But one must never forget that although ancient wisdom is not fallible or flawless, it is undoubtedly the first step in the long journey of human progress and evolution, which has brought us to where we stand proudly. Now, one Sanskrit shlok I will say, and then I will take your leave. यहाँ आके जो मुझे एक और चीज़ जो अच्छी लगी, जो सबसे मिलके मैं आज काफ़ी मिलता रहा सुबह 4 बजे से, और मैं बिल्कुल कोई रेस्ट नहीं किया बीच में। एक बहुत पुराना श्लोक है, अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये प्रिंसिपल यहाँ पर बिल्कुल एकदम से लागू होता है, और मैं बड़ा खुश हूँ इस बात को देख के। थैंक यू सो मच।